Alright, so we are starting with the muscles of anterior compartment. तो anterior compartment में 4 मसल होती हैं, ठीक है. One is the tibialis anterior, then the extensor digitorum longus, hallucis longus and peroneus tertius, ठीक है. Anterior digitorum longus, hallucis longus and the peroneus tertius. So you can remember it with the Tom, Dick, Harry or prime. Okay, and the peroneus tertius, this muscle, it helps in the eversion of the foot. Then next, what are the actions? So tertius helps in the eversion, and the tibialis, Tom, Dick and the Harry, they crosses the ankle joint anteriorly. Okay, they crosses the ankle joint anteriorly. So इनका क्या function होएगा? They help in the dorsiflexion of the ankle joint. Then जो tibialis anterior होता है, ठीक है, it also assists in the inversion of the subtalar joint. Anterior also in the inversion of subtalar joint. Then जो digitorum longus है, it helps in the extension of lateral 4 toes. Okay, extension of lateral 4 toes. Alright, then the hallucis longus, it helps in the extension of great toe. Alright, great toe. Then next, these are supplied by the muscles of the anterior compartment. These are supplied by the deep peroneal nerve. And if deep peroneal nerve is injured, then the dorsiflexion is lost and the foot drop will occur. So foot drop, it mainly occurs due to the deep peroneal nerve, then due to the common peroneal nerve injury. Okay, first option would be deep peroneal nerve. Okay, if the PJ question, then also the common peroneal nerve. Fine. The next is about the extensor retinaculum. So extensor retinaculum, okay, there are two extensor retinaculum. One is superior and the other is inferior extensor retinaculum. So ये आगे की साइड होता है. Alright, तो like let's see कि this is the leg. So this will be the superior and this will be inferior. Fine. So superior में क्या होता है? It is extending from the lower end of the tibia to the lower end of the fibula. Fine. And the inferior extensor retinaculum, it is of the Y shape, and the stem of the inferior is attached to the calcaneum. Okay, the stem is attached to calcaneum and bifurcates into the two. Fine, calcaneum, and here superior is from tibia to the fibula. Fine, and this is from the calcaneum, and it bifurcates into the two, upper band and the lower band. Upper band is attached to the medial malleolus of the tibia. The lower band blends with the plantar aponeurosis. So upper band it is attached to the medial malleolus of the tibia, and the lower band it blends with the plantar aponeurosis. Fine. Then we'll talk about lateral compartment of the leg. So in the lateral compartment there are two muscles. One is the peroneus longus and one is the peroneus brevis, and both are supplied by the superficial peroneal nerve. So the superficial peroneal nerve, it supplies entire dorsum.
Okay, except the first web space, except the first web space which is supplied by the deep peroneal nerve. Fine. So the lateral aspect of the foot, it is supplied by the sural nerve. Alright, like this is, if this is the foot, this is the foot. So the first web space is supplied by our deep peroneal nerve. Okay, lateral surface by the sural nerve, lateral aspect of the foot. Let's say this is the sural nerve, then medial aspect by the saphenous nerve. Alright, this is the saphenous nerve, and then rest all is the superficial peroneal nerve. Fine, rest all is the superficial peroneal nerve. Alright, this one all superficial. So lateral aspect by the sural nerve, which is a branch of tibial nerve. Okay, which is a branch of tibial nerve. Then the medial aspect by the saphenous nerve, which is a branch of femoral nerve, and it supplies up to the ball of great toe. Alright, so saphenous nerve, it supplies up to the ball of great toe. Fine. The next is regarding the inversion and the eversion movement. So inversion and the eversion movement, it occurs at the subtalar joint and the talocalcaneo-navicular joint. Fine. And then inversion, what is inversion? Inversion is the medial movement of the sole. Okay, what is eversion? Eversion is the lateral movement of the sole. Fine. Then it occurs while walking on a inversion, and the eversion, it occurs while walking on an uneven surface. Fine. So inversion is done by two muscles, that are the tibialis anterior and the tibialis posterior, and the eversion is again done by peroneus longus and the peroneus brevis. Fine. And most common ligament that is involved in the inversion sprain, is anterior talofibular ligament. Fine. Then we will talk about the ossification center for the tibia and the fibula. So primary ossification center for the shaft, okay, it appears at the 7th of week. Then the secondary center for the upper end, it appears at the time of the birth. So we are talking collectively about the fibula and the tibia. So for the lower end, it appears at the first year. So at the 7th week, then at the birth, and at the first year. Then next is sciatic nerve. So sciatic nerve, it is the thickest nerve. Okay, we all know it is the thickest nerve, and it has the two components. One is the tibial component and other one is the common peroneal component. So the tibial component, it is the ventral division of
it is the ventral division of tibial component, ventral division of L4, L5, S1, S2, S3. Fine. Then the common peroneal nerve, it is the dorsal division of L4, L5, S1 and the S2. L4, L5, S1 and the S2. Fine. Then the sciatic nerve, it enters the gluteal region. It enters the gluteal region by passing below the piriformis. All right, below the piriformis muscle. In the sciatic nerve, it does not supply any of the muscle in the gluteal region. Okay, it does not supply any of the muscle of gluteal region. Okay. Then next, the sciatic nerve, it enters the posterior compartment of the thigh. It enters the posterior compartment of thigh and it supplies hamstring muscles. Okay, it supplies hamstring muscles and they are supplied by tibial component. They are supplied by the tibial component of the sciatic nerve. Okay, tibial component of the sciatic nerve. The next is that the common peroneal nerve, common peroneal component, it supplies short head of the biceps femoris. Fine. Common peroneal nerve, it supplies short head of biceps femoris. Biceps femoris. The next is regarding at the upper angle of the popliteal fossa. Okay, then it will come down and at the upper angle of the popliteal fossa, sciatic nerve divides into the tibial nerve and the common peroneal nerve. ठीक है, कहाँ पर डिवाइड होती है? एट द अपर एंगल ऑफ द popliteal fossa. So the tibial nerve, it is the nerve of the posterior compartment of the leg. Tibial nerve is the nerve of the posterior compartment of the leg. And the common peroneal nerve, it winds around the neck of the fibula. It winds around the neck of the fibula and it divides into the deep peroneal nerve and the superficial peroneal nerve. Fine. So the deep peroneal nerve, it is a nerve of the anterior compartment of the leg. It is the nerve of the anterior compartment of the leg. And the superficial peroneal nerve, it is the nerve of the lateral compartment of the leg. Fine. Superficial is a nerve for the lateral compartment of the leg. Right. Then about the ankle joint. So ankle joint, it is formed by the three bones. Ankle joint is formed by the three bones. One is the medial malleolus, then lateral malleolus, and the talus bone. So this is ankle joint. So medial malleolus is what? Medial malleolus is the tibia का lower end. ठीक है. Lateral malleolus is what? It is fibula का lower end. Fine. And the talus. So basically tibia, fibula and the talus. Then we will talk about the sustentaculum talli. What is it? Sustentaculum talli, it is the projection on the medial side of calcaneum. Projection on medial side of calcaneum. Fine. Calcaneum. Like, let's say this is fibula. Let's say this is fibula and this is tibia. Fine, this is tibia and this is talus. This is talus and this is calcaneum. So on the medial side there is a projection or the elevation, fine, which is called as a sustentacular talli, right?
Then supports sustentacular tali. What does it do? It supports the talus bone. It supports the talus bone and it prevents the downward displacement of the talus bone. Okay, downward displacement नहीं होने देता. Fine. Then flexor hallucis longus tendon. इसकी सिग्निफिकेंस है कि फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस का टेंडन, हम इसको इसी से पहचानते हैं. इट पासेस इन द ग्रूव प्रेजेंट बिलो द सबस्टेंटिकुलम tali, right? Then the three ligaments are attached to the tali. Three ligaments are attached. One is a spring ligament. ठीक है. The next is a deltoid ligament and next is talocalcaneal ligament. Fine. Spring ligament, then the deltoid ligament and the talocalcaneal ligament. Then first we will talk about the spring ligament. So spring ligament is between the substentacular of the calcaneum to the navicular bone. Okay, substentacular tali of the calcaneum to the navicular bone, right? It is also known as plantar calcaneonavicular ligament. What? Plantar calcaneonavicular ligament. Then it supports the head of the talus. And also it supports the medial longitudinal arch. And if there is injury of the spring ligament, it will result into flat foot. Okay, condition called as flat foot. So below the ankle joint, the subtalar joint is present. Below the ankle joint, subtalar joint is present. Fine. And the ankle joint, it is strengthened by the two ligaments. One is the medial collateral ligament, which is also known as the deltoid ligament, and the lateral collateral ligament. Fine. Medial collateral ligament and the lateral collateral ligament. So हम बनाते हैं जैसे यहाँ पे, let's say this is calcaneum, and this is talus, and this is tibia, this is fibula. Fine, like this. So, and this is naviculum, navicular bone, and this is substentacular tali. Right? So which one is the spring ligament? This one. Fine, this one is the spring ligament. Right? Now next we will talk regarding the deltoid ligament. So deltoid ligament, it is a strong ligament and it has four parts. The first part is the tibio-navicular part. The second part is tibiocalcaneal part. The third part is the tibio-talar part. Okay, tibio-talar parts are divided into the anterior part and the posterior part. So the tibio-navicular part, it generally it blends with the spring ligament. Okay, then tibiocalcaneal part, from the tibia, it is from the tibia to the substentacular tali. Okay, then tibio-talar part has the anterior and the posterior part. Alright.
anterior and the posterior. So let's see in this diagram. So first of all, we will draw it by another. It's this one. Okay. So first of all, tibio-navicular part, it blends with this spring ligament. Okay, tibio-navicular part blends with the spring ligament. Okay, fine. Then tibiocalcaneal part, tibiocalcaneal part, fine, with the substentacular tali. ठीक है. Then tibio-talar part का anterior and the posterior. So this one will be anterior and this one will be the posterior. This one will be the posterior. So actually the talus ये आगे तक होता है talus ऐसे. Fine. So ये इस तरह से होगा. तो ये पूरा हो गया deltoid ligament हो गया. ठीक है. Anterior tibio-talar and the posterior tibio-talar. Then tibiocalcaneum and the tibio-navicular. ठीक है. ये 3 पार्ट्स हो गए इसके बेसिकली, बट इसके लिगामेंट्स 4 होते हैं. ठीक है. और ये हो गई स्प्रिंग लिगामेंट. ठीक है. दिस इज स्प्रिंग लिगामेंट. तो ये आगे स्प्रिंग लिगामेंट और डेल्टोइड लिगामेंट कैसे होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स ऑफ द एंकल जॉइंट. ठीक है. लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द एंकल जॉइंट. So anterior talofibular ligament, it is most commonly affected in the inversion strain. Fine. Anterior talofibular ligament. ठीक है. anterior talofibular ligament. ठीक है. ये कौन सा है? anterior talofibular ligament. So this one ligament. ओके. इसको हम इससे भी शो कर सकते हैं. ये वाला जो लिगामेंट है डेट इज द टैलोफिबुलर लिगामेंट. ठीक है. टैलोफिबुलर लिगामेंट. ये एक्चुअली लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट में आता है कि लेटरली प्रेजेंट है ना इंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट. ठीक है. एंड it is the most commonly affected in the inversion sprain. Fine. It is most commonly affected in inversion sprain. Fine. Then there is calcaneofibular ligament. Then there is posterior talofibular ligament. Okay. There is posterior talofibular ligament. Okay, fine. जैसे ये है, इसमें एक तो ये हो गया पोस्टीरियर. ठीक है. पोस्टीरियर लगा लिया. पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट. एंड एक हो गया एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट. ठीक है. देन पोस्टीरियर कैल्केनियोफिबुलर. ठीक है. देन एक हो गया ये कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट. ये 3 हो गए. दीज आर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स ऑफ द एंकल जॉइंट. ठीक है. लेटरल जो फिबुला से अटैच है वो सारे लेटरल कोलेटरल हो गए, राइट. ओके. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द बाइफर्केट लिगामेंट. व्हाट इज बाइफर्केट लिगामेंट? ठीक है. इसको हम चोपर्ट्स लिगामेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चोपार्ट्स लिगामेंट. सो इट इज द लिगामेंट ऑफ calcaneocuboid.
Fine, it is a ligament of calcaneocuboid joint. So proximally it is attached to the calcaneum. Proximally it is attached to the calcaneum, and the distally it is attached to the calcaneonavicular and the calcaneocuboid. Distally it is attached to calcaneonavicular and the calcaneocuboid. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द चोपार्ट्स लिगामेंट. तो इसको देखने की कोशिश करते हैं कैसे हो सकता है ये. Like proximally it is attached to the calcaneum and the distally to the calcaneo. This is navicular and navicular के आगे होती है cuboid. ठीक है, यहाँ पे एक और होती है, that is the cuboid. Fine. So calcaneonavicular एंड calcaneocuboid, राइट, कुछ इस तरह. सो ये हो गया चोपार्ट लिगामेंट विच इज बाइफरकेट. तो अभी तक हमने कौन कौन से देखे, हमने स्प्रिंग लिगामेंट देखा था एक, राइट, ये स्प्रिंग लिगामेंट देखा था. देन उसके बाद हमने देखा ये सारा येलो वाला, दिस इज डेल्टोइड लिगामेंट. ठीक है, दिस इज डेल्टोइड लिगामेंट. देन ये तीन जो हैं ब्लू वाले, दिस आर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, एंड दिस इज बाइफरकेट और चोपार्ट लिगामेंट. ठीक है, तो अभी तक ये लिगामेंट देखे. देन एक और लिगामेंट है, दैट इज अ लिस-फ्रैंक लिगामेंट. ठीक है, लिस-फ्रैंक लिगामेंट. सो ये क्या होता है, इट इज़ नोन एज द क्यूनियो मेटाटार्सल इंटरओशियस लिगामेंट. ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम हो गया, देखते हैं. इट इज़ नोन एज द क्यूनियो. ठीक है, क्योंकि ये क्यूनी फॉर्म पे लगा होता है, दैट इज़ द क्यूनियो मेटाटार्सल इंटरओशियस लिगामेंट. सो जितना इसका बड़ा नाम कर दिया उतना बड़ा ये होता नहीं है. जनरली क्या होता है कि ऐसे ये लेग है, लेट्स सपोज, ठीक है, एंड ये हो गई, ये मेटाटार्सल हो गए. फाइन, दीज आर द मेटाटार्सल. यहाँ पे क्यूनिफॉर्म बोन प्रेजेंट है, मिडल क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म एंड ऑल दिस. सो क्यूनिफॉर्म से मेटाटार्सल में जो लिगामेंट होता है, ठीक है, लेट्स से दिस वन, क्यूनिफॉर्म से जो मेटाटार्सल में लिगामेंट होंगे ऐसे, दीज आर द लिस-फ्रैंक. ठीक है, और ये जो है, लेट्स से दिस इज मीडियल क्यूनिफॉर्म, सो सिर्फ मीडियल क्यूनिफॉर्म से होता है टू द सेकेंड मेटाटार्सल. ठीक है, सेकेंड मेटाटार्सल. सो it extends from medial cuneiform to second metatarsal, right. Then next is regarding the posterior compartment of the leg. So posterior compartment of the leg has the two layers, the superficial layer and the deep layer. So what are all the muscles of the superficial layer? Superficial layer has the gastrocnemius muscle. Then superficial layer has plantaris muscle. It has soleus muscle. So the mnemonic is GPS. Gastrocnemius muscle, plantaris muscle, and the soleus muscle. So we will talk about the gastrocnemius muscle. Gastrocnemius muscle has the two heads. And these two heads, they join with the soleus. Fine, they join with the soleus, and it forms triceps surae. Then it forms triceps surae.
So what is triceps surae? Triceps surae is the one head of the soleus and two heads of the gastrocnemius. ठीक है. Then they form Achilles tendon और tendocalcaneus. ठीक है. Then they form Achilles tendon और tendocalcaneus. ठीक है, which is attached to the calcaneum. So the plantaris muscle tendon, it is attached to the Achilles tendon. ठीक है. लास्ट बच गया, दैट इज द प्लांटारिस. सो दो हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस एंड द सोलियस, इन्होंने तो बना लिया ट्राइसेप्स सूरे. अब ट्राइसेप्स सूरे पे जाके अटैच करता है प्लांटारिस. फाइन, इस तरह से इनका रिलेशन होता है. ठीक है. सो प्लांटारिस टेंडन, इट इज अटैच टू द देन Achilles tendon. So in the superficial posterior compartment there is no neurovascular structure is seen. ठीक है. तो ये सारा था, इन्होंने लिगामेंट्स वगैरह बनाए, फाइनली टेंडन बनाया. एक्लेस टेंडन में प्लांटारिस का टेंडन जाके अटैच हो गया. एंड सुपरफिशियल, इसीलिए सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में देर इज़ नो neurovascular structure is seen. Okay, this is very important. Fine. So now we will move on towards the posterior compartment deep layer. Fine. So in this, first muscle is popliteus muscle. So popliteus muscle, the tendon is intracapsular. Fine. The tendon of popliteus muscle is intracapsular. And what are the action? ठीक है. What are the action of the popliteus muscle? Action is flexion of the knee joint. Okay. Popliteus muscle, it ये पीछे से क्रॉस करेगी. ठीक है. It crosses the knee joint posteriorly. So ये क्या करवाएगा? It causes the flexion of the knee joint. So flexion, it initiates the unlocking of the knee joint. So what is the nerve supply of the popliteus muscle? Nerve supply is the tibial nerve. ठीक है. So what is the nerve supply? It is the nerve of the posterior compartment, which is the tibial nerve. So now we should talk something about the locking of the knee and the unlocking of the knee. So the locking of the knee can be done by the someone who is crossing anteriorly, and that is the quadriceps femoris. Quadriceps, not quadratus. Quadriceps femoris. Right? And it causes the extension of the knee. When the foot is on the ground, the femoral condyle rotates medially over the tibia. Okay. When the foot is on the ground, so the femoral condyle, it rotates medially or internally over the tibia. And what happens in the unlocking? Unlocking is done by the popliteus. Right? So what happens here? There is the flexion of the knee joint. So when the foot is on the ground, the femur rotates laterally. Okay. So the femur rotates laterally for the unlocking, or externally. Femur rotates laterally or externally over the tibia, and hence unlocking will happen. Right? And next we will talk about the deep layer of the posterior compartment. Okay, other muscles. So deep layer, there will be again Tom, Dick and the Harry. So T say there is tibialis posterior, then D say there is flexor digitorum longus, and H से there is flexor hallucis longus. ठीक है. आगे कौन कौन सी थी? 3 मसल थी. एक हमारे पास पेरोनियस टर्शियस भी थी. ठीक है.
प्लस आगे एक्सटेंसर वाले आ रहे थे। सो ये क्या करेंगे, सारे क्रॉस करते हैं एंकल जॉइंट को पोस्टीरियरली। सो ये सारे क्या करेंगे, ये कराएंगे प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, राइट राइट। नेक्स्ट इज जो टिबियलिस पोस्टीरियर है, ओके, जो टिबियलिस पोस्टीरियर है वो क्या कॉज कराएगा, that will cause the inversion. Both the tibialis anterior and the tibialis posterior, they will cause inversion, right? Then we can talk about the flexor retinaculum. ठीक है, ऊपर हमने देखा था एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जिसके दो थे, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल और डीप, डीप वाला वाई शेप में था। अभी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की बात करते हैं। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में क्या होता है जैसे ये लेटरल साइड है अगर, सो यहाँ पे लेटरली प्रेजेंट होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे, ठीक है। अब इसमें मीडियली टू लेटरली कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियली टू लेटरली टॉम, डिक, ए एन एंड हैरी, ऑलराइट। सो टी से वही tibialis posterior, देन फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है। देन ए से पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, देन नर्व कौन सी जाएगी, टिबियल नर्व, देन एच से फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस, राइट। देन टिबियल नर्व, it will again divide into the medial plantar nerve and the lateral plantar nerve, right. Then one more thing, कि this flexor digitorum longus will cross with the flexor hallucis longus, and this crossing will occur at the medial longitudinal arch, and sometimes what happens that this crossing will compress the medial plantar nerve, it can compress the medial plantar nerve, okay. सो इसको हम बोलते हैं मास्टर नॉट, मास्टर नॉट ऑफ हेनरी, ठीक है, मास्टर नॉट ऑफ हेनरी, राइट। सो ये यहीं ख़त्म हो गया। देन नेक्स्ट वी विल टॉक रिगार्डिंग द ब्लड सप्लाई, नेक्स्ट वी विल टॉक रिगार्डिंग द ब्लड सप्लाई ऑफ आर्चेस। सो ब्लड सप्लाई करते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास एयोर्टा है। सो एयोर्टा इट एंड्स एट द लेवल ऑफ L4, ठीक है। एयोर्टा कहाँ एंड करती है, इट एंड्स एब्डोमिनल एंड्स, एयोर्टा एंड्स एट द लेवल ऑफ द L4, then it can be divided into the right common iliac artery and the left common iliac artery, then common iliac artery can be again divided into external and the internal iliac artery, and the internal iliac artery. So external iliac artery, the branches are the F, D and the I, ठीक है। and internal iliac artery, it can be divided into the anterior and the posterior. So anterior divisions are, so Auntie Somi is a very good person, this is a mnemonic, is a very good person, ठीक है। I for inferior and these are its branches. So she is on the pills, से posterior की 3 branches I, L and the S, right, alright. Then हम देख सकते हैं इसको, देन इसकी अगर बात करें पोस्टीरियर डिवीज़न ILS, ठीक है। तो आई से होएगा इट्स लंबोसेक्रल आर्टरी, राइट। आई से इट इज़ लंबोसेक्रल आर्टरी, देन
L say it is lateral sacral artery, and S say it is superior gluteal artery. S say it is superior gluteal artery. Just wait a second. Huh. So here it is. तो सबसे पहले एंटीरियर डिवीज़न में इट्स एस फॉर सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है, एस फॉर सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, देन ओ फॉर ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ठीक है, देन एम फॉर मिडल रेक्टल आर्टरी, एंड इंफीरियर से 3 होंगे, ठीक है, इंफीरियर वेसिकल, देन द इंफीरियर ग्लूटियल एंड द इंटरनल पुडेंडल, ठीक है, देन पोस्टीरियर डिवीजन की इलियोलंबर, लेटरल सैक्रल एंड द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, राइट, इंफीरियर ग्लूटियल यहाँ पे है। देन एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी की ब्रांचेस, दैट इज फिमोरल आर्टरी, एक्सटर्नल की ब्रांच है, राइट, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी इंटरनल की ब्रांच है। देन डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी एंड द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक ऊपर जाके एनास्टोमोस करेगी, किससे, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक से, राइट। ओके, सो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी देख लो और सुपीरियर ग्लूटियल, ठीक है, सुपीरियर ग्लूटियल इज अ ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन, फाइन। सो ये है कि inferior gluteal anterior division is a branch of the anterior division, and the superior gluteal is a branch of the posterior division, fine. Then the arterial supply of the thigh. So arterial supply of thigh is by the femoral artery. Femoral artery is a branch of FTI, which is the external iliac artery. Fine. So external iliac artery, it continues as a femoral artery at the mid-inguinal point of the femoral triangle, Then the femoral artery, it enters the lateral compartment of the femoral sheath, ठीक है, femoral sheath. Then femoral sheath has the 3 compartments. Okay, then the femoral sheath has the 3 compartments. Laterally is the femoral artery, ठीक है, then intermediate is the femoral vein, then medial is a femoral canal, ठीक है, then boundaries of the femoral ring, anterior is the inguinal ligament, posteriorly is the pectineus muscle and the pectineal ligament of the Cooper, then medially is the lacunar ligament and the laterally is the femoral vein, ठीक है, then it will form the adductor canal, it will go into the adductor canal, then it will go into adductor hiatus, then it enters the back of the knee joint and it will form the popliteal artery, फाइन। सो कैसे होता है कि ये ऊपर से आई, ठीक है, पीछे फिमोरल ट्रायंगल में घुसी, वहाँ पे हमें पता है ये सबसे लेटरली होती है, ओके, पहले मिड इनग्वाइनल पॉइंट में थी, देन फिमोरल ट्रायंगल में थी, उसके बाद ये नीचे आएगी, नीचे आने के बाद ये अडक्टर कैनाल में जाएगी, अडक्टर कैनाल से अडक्टर हाइटस में जाएगी, अडक्टर हाइटस में बैक ऑफ द नी में जाके ये पोप्लीटियल आर्टरी बन जाएगी, ठीक है, ये इसका पूरा रूट है। अब ब्रांचेस क्या क्या है फीमोरल आर्टरी की, ठीक है, ब्रांचेस क्या क्या है, तो इसकी प्रोफंडा, ब्रांचेस ऑफ द प्रोफंडा फीमोरिस, ठीक है, इन द परफोरेटिंग ब्रांचेस। सो प्रोफंडा फीमोरिस की जो प्रोफंडा डीप है उसकी ब्रांचेज है, दैट इज़ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, देन द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है, देन द परफोरेटिंग ब्रांचेस, ठीक है,
ये हो गया प्रोफंडा। देन perforating branches, 4 in the number, that is the cruciate anastomosis and the nutrient artery to the femur, then the descending genicular artery branch, ठीक है, and the anastomosis with popliteal artery, ठीक है, ये perforating branch हो गए। वन थिंग इज कि जो इसका डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच होता है जस्ट बिफोर पासिंग थ्रू द अडक्टर कैनाल, ठीक है, जस्ट बिफोर अडक्टर कैनाल जो इसका डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द सेफेनस ब्रांच एंड द आर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है, द आर्टिकुलर ब्रांच, दिस आर्टिकुलर ब्रांच इट विल एनास्टोमोस एट द knee joint, right? Then next we can talk about the lower limb anastomosis. So first one is about the trochanteric anastomosis. So the trochanteric anastomosis is between the external iliac and the internal iliac artery, ठीक है। So in the external iliac, ठीक है, it will give a femoral artery as its branch, and femoral artery will further give the branches of the profunda femoris, and it has the two branches, medial circumflex femoral and the lateral circumflex femoral, ठीक है। ये एनास्टोमोस करेगा इंटरनल इलियाक आर्टरी की कौन सी ब्रांचेस से, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर एंटीरियर की डिवीजन है, सुपीरियर पोस्टीरियर डिवीजन में, राइट। तो ये ट्रोकेंटर पे एनास्टोमोस हो रहा है। उसके बाद क्रूशिएट एनास्टोमोसिस हो रही है, ठीक है, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस हो रही है। सो ये भी यहीं पे ही होती है और ये क्रॉस शेप में होती है, ठीक है, ऐसे क्रॉस शेप में होती है, ठीक है। तो इसमें आर्टरीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें आर्टरीज इन्वॉल्व है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ द इंटीरियर डिवीज़न, ठीक है, यहाँ पे आएगी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी ऊपर से, देन मीडियल एंड द लेटरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल, द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल, ठीक है, एंड नीचे से आएगी फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, ठीक है, फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। सो ये हो जाएगा क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, सो क्वेश्चन कहाँ लगता है इसमें, ठीक है, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस कि कौन सी आर्टरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, सो पोस्टीरियर डिवीज़न वाली इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, और पोस्टीरियर डिवीज़न की कौन सी होती है, दैट इज़ द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है। सो कौन सी इन्वॉल्व नहीं होती, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी इन्वॉल्व नहीं होती, राइट। देन नेक्स्ट इज आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द लेग, आर्टीरियल सप्लाई ये थी थाई की सप्लाई। अब हम लेग पे आते हैं। सो लेग में बैक ऑफ द नी जॉइंट को सप्लाई करेगी फेमोरल आर्टरी और ये कंटिन्यू करेगी एज अ पोप्लेटल आर्टरी इन द पोप्लेटल फोसा, ठीक है। फिर जो पोप्लेटल आर्टरी है इट डिवाइड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लेटल मसल एंड इट गिव्स anterior tibial artery and the posterior tibial artery, ठीक है। anterior tibial artery it will supply the anterior compartment of the leg and the posterior tibial artery it will supply the posterior compartment of the leg, fine। then the posterior artery branches, popliteal artery, branches of the popliteal artery, there are 5 genicular branches of the popliteal artery which are the superior medial genicular, superior lateral genicular, inferior medial genicular and the inferior lateral genicular, ठीक है। popliteal artery superior medial genicular, ठीक है, then inferior medial genicular, superior lateral genicular and the inferior, ठीक है, ऐसे सुपीरियर मीडियल हो गई, इंफीरियर मीडियल हो गई, सुपीरियर लेटरल हो गई, इंफीरियर लेटरल हो गई। तो जो मिडिल जेनिकुलर ब्रांच है
middle genicular branch, it pierces the oblique popliteal ligament. It pierces the oblique popliteal ligament, which is a derivative of semimembranosus. Okay, so this is important point. Middle genicular branch, it pierces the oblique popliteal ligament, which is actually a derivative of semimembranosus. ठीक है. The next is popliteal artery हो गई. Then posterior tibial artery. ठीक है, पोप्लीटियल आर्टरी अब डिवाइड कर जाएगी, एंटीरियर आगे चली जाएगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पीछे. तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं पेरोनियल आर्टरी एंड द फिबुलर आर्टरी, राइट. पेरोनियल आर्टरी एंड द फिबुलर आर्टरी. सो पेरोनियल आर्टरी इट सप्लाइज द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग. ठीक है, पेरोनियल आर्टरी इट सप्लाइज द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो थी, इट इज़ द, वो क्या थी, सप्लाइज द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग. ठीक है, ऐसे पेरोनियल आर्टरी भी इट सप्लाइज द लेटरल कंपार्टमेंट. ठीक है, जनरली नेम्स जो है आर्टरी के नेम्स फॉलोज द वेन्स, वेन्स के फॉलो द लिम्फेटिक्स एंड वो ऑल्सो द फॉलोज नर्व्स. ठीक है, देन nerve to the lateral compartment is superficial peroneal nerve. ठीक है, then peroneal artery it is a nutrient branch to the fibula. ठीक है, nutrient branch to the fibula. So nutrient artery, nutrient branch to the tibia, it is a posterior tibial artery. ठीक है, to the tibia it is posterior tibial artery, but posterior tibial artery, but to the fibula it is peroneal artery. ठीक है, to the fibula it is peroneal artery, right. And next is the posterior tibial artery. It passes through the flexor retinaculum. Posterior tibial artery, ठीक है, this posterior tibial artery it passes through the flexor retinaculum, Tom, Dick and Harry. ठीक है, it enters the foot and it divides into the medial and the lateral plantar artery. Posterior tibial artery divides into medial and the lateral plantar artery. Fine. The next is about anterior tibial artery. So anterior tibial artery it passes above the interosseous membrane. ठीक है, and it is the artery for the anterior compartment of the leg, and its branches are the medial and the lateral malleolar branch. ठीक है, medial and the lateral malleolar branch. Fine. Then it continues in the foot. It then continues in the foot as the dorsalis pedis artery. ठीक है, पोस्टीरियर वाली तो मीडियल और लेटरल प्लांटर में डिवाइड हो रही थी, ये एंटीरियर वाली डोर्सालिस पेडिस आर्टरी एट द जंक्शन ऑफ द मेल्यूलर ब्रांचेस. फाइन. सो द आर्टीरियल सप्लाई, नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द फुट. ठीक है, सो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द फुट इज बाय dorsalis pedis artery, which is a branch of anterior tibial artery, which is a branch of popliteal artery, which is a branch of the femoral artery. So the branches of the dorsal pedis artery are the medial tarsal artery, then the lateral tarsal artery, then the arcuate artery, ठीक है, एंड देन द फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी. ठीक है, फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी. तो इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. लाइक अगर दिस इज फुट, 1 2 3 4, दिस इज थंब. ओके, बहुत ही रफ है ये. सो इसमें जैसे ये अगर एंटीरियर टिबियल आर्टरी आ रही है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, सो इट विल गोज इनटू द मीडियल मेल्यूलर आर्टरी
ठीक है, and it will goes into the lateral malleolar artery. ठीक है, then it will continue as the dorsalis pedis artery, and it will give the medial tarsal artery, and it will give the lateral tarsal artery. All right, then it will dorsalis artery will further proceed, and it will give an arcuate artery like this. ठीक है, it will give an arcuate artery. ठीक है, this is the arcuate artery. All right, and this one branch from this dorsalis pedis artery also, this goes to the first dorsal metatarsal artery. ठीक है, it will give a first dorsal metatarsal artery like this. ठीक है, first dorsal metatarsal artery. ठीक है, and this arcuate artery, it will give branches to the further fingers. Okay, this will give branches like this. Fine, arcuate artery like this and like this. So dorsalis pedis artery, it is dividing into two, arcuate artery and the first dorsal metatarsal artery. Arcuate artery and the first dorsal metatarsal artery. फाइन. सो अभी क्या क्या ब्रांचेस हो गए डोर्सालिस पेडिस आर्टरी के? मीडियल टार्सल आर्टरी, लेटरल टार्सल आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी एंड द फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी. ठीक है, देन इट एंटर्स द सोल पासिंग थ्रू द ट्रायंगुलर गैप ऑफ द फर्स्ट डोर्सल इंटरओशियस. ठीक है, पासिंग थ्रू द ट्रायंगुलर गैप ऑफ द फर्स्ट डोर्सल इंटरओशियस. ठीक है, सो ये जो है यहाँ पे, ये जब एंटर करता है यहाँ पे एक ट्रायंगुलर गैप होता है. ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर गैप होता है, इसमें से पास करता है ट्रायंगुलर गैप ऑफ द फर्स्ट डोर्सल इंटरओशियस. ठीक है, एंड द प्लांटर आर्च, it is formed by the dorsalis pedis artery and the lateral plantar nerve. ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि हमारा जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी था वो दे रहा था मीडियल प्लांटर नर्व. ठीक है, मीडियल प्लांटर नर्व एंड द लेटरल प्लांटर नर्व. ठीक है, अब क्या है ना कि पीछे से हमारा आ रहा है, यहाँ से पीछे से आ रही है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. ये तो सारे एंटीरियर टिबियल आर्टरी का चल रहा है. ठीक है, बट पीछे से पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की जा रही है और वो दो में डिवाइड करते हैं, मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड द लेटरल प्लांटर आर्टरी. ठीक है, तो मीडियल दे देगी, बट जो उसकी लेटरल प्लांटर आर्टरी है, ठीक है, उसकी एक ब्रांच होगी लेटरल प्लांटर आर्टरी. ठीक है, वो क्या करेगी, वो जाके एनास्टोमोस करेगी आर्कुएट आर्टरी के साथ. ठीक है, आर्कुएट आर्टरी के साथ ऐसे और ऐसे. इसको हम बोलते हैं प्लांटर आर्च. ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं दैट इज़ द प्लांटर आर्च. ठीक है, प्लांटर आर्च. राइट, समझ आया? सो व्हाट इज प्लांटर आर्च? प्लांटर आर्च इज द डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, इसकी भी आर्कुएट आर्टरी प्लस लेटरल प्लांटर आर्टरी. ठीक है, लेटरल प्लांटर आर्टरी. सो डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, एंटीरियर tibial artery and the posterior tibial artery. Fine. Okay. Then next is about the arches of the foot. ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये वही कैसे सारी आर्टरीज हैं
सो एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, इसकी ब्रांच होती है femoral artery. Femoral artery, popliteal artery. Popliteal artery will divide into anterior tibial and the posterior tibial. Posterior tibial artery की ब्रांचेस होंगी peroneal artery and the fibular artery. Peroneal artery and the fibular artery, ठीक है, एंड posterior tibial artery. देन ऑल्सो इसकी ये बाद में एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल देगा, ठीक है. ऑल्सो यहाँ से जाएगी एक डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी जाएगी और एक डीप फीमोरल आर्टरी जाएगी, ठीक है. इसकी ब्रांचेस होंगी डीप फीमोरल एंड द डिसेंडिंग जेनिकुलर, एंड डीप फीमोरल विल गिव medial circumflex and the lateral circumflex femoral, ठीक है. एंड दिस विल गिव डोर्सल, एंटीरियर विल गिव डोर्सालिस pedis artery and this will form the dorsal arch and the plantar arch, ठीक है. And also they will give a branch to the dorsal metatarsal digits, ठीक है, dorsal foot. ये था. Then we will talk about the arches of the foot. तो arches में दो तरह के arch होंगे, एक longitudinal arch, ठीक है, एंड एक transverse arch. So longitudinal arch में medial longitudinal and the lateral longitudinal arch. So इसको बनाएंगे. Let's see. 2 3 4, ठीक है, 5. This is our पैर, ठीक है. सो इसमें मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च कौन सा होएगा, ये हो गया मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है. देन ये हो गया लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ये हो गया लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है. एंड ये हो गई ट्रांसवर्स आर्च, ये हो गई ट्रांसवर्स आर्च. इस तरह से होता है. देन सबसे पहले बात करते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की, ठीक है. सो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में सबमिट या फिर बोलेंगे कीस्टोन, सबमिट, कीस्टोन या फिर पीक ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, वो कौन होता है, दैट इज टेलस, ठीक है, दैट इज टेलस. फाइन. नोट द कैल्केनियम, मीडियली टेलस होता है, पीक, राइट. देन द जॉइंट ऑफ द आर्च, ठीक है, कैल्केनियम नहीं होता. जॉइंट ऑफ द आर्च इज हेयर इज टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, ठीक है. दिस इज टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट विच इज अ बॉल एंड द सॉकेट टाइप ऑफ द जॉइंट. Ball and the socket type of the joint. Also incussus shapes is ball and the socket, right. Then the plantar calcaneonavicular ligament, plantar calcaneonavicular ligament, it is also known as the spring ligament, it is also known as the spring ligament, ठीक है. and it is the main support of the medial longitudinal ligament, ठीक है. the main support of the medial longitudinal ligament is the spring ligament, ठीक है. spring support to the so what are all the sling supports to the medial longitudinal ligament, ठीक है. medial longitudinal ligament major support, sling support is tibialis anterior and the tibialis posterior, ठीक है. and their action is inversion, right. and the minor sling support are the, if we talk about the minor, then they are the flexor hallucis longus and the flexor digitorum longus. Fine. जो कि हमारे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में से जा रहे हैं वही एज अ स्लिंग सिस्टम काम करते हैं, राइट.
Then next is about the lateral longitudinal ligament. So lateral longitudinal ligament में summit, peak और the keystone, it is the calcaneum. ठीक है, it is calcaneum. Fine. Then the joint of the arch is calcaneocuboid. Joint is of the arch is the calcaneocuboid. Medial में था talocalcaneal navicular TCN. ठीक है, the calcaneocuboid is the saddle type of the joint. ठीक है, calcaneocuboid is the saddle type of the joint. CCM, CSI. All right. Then the support to the lateral longitudinal ligament is the long plantar ligament and the short plantar ligament. ठीक है, long plantar ligament and the short plantar ligament. अब ये क्या होते हैं? ठीक है, these are the calcaneometatarsal ligament. ठीक है, calcaneocuboid and the calcaneometatarsal. The short one is the calcaneocuboid ligament and the long one is the calcaneometatarsal ligament. ठीक है, तो जैसे ये वाला है this one is the long plantar ligament which is calcaneometatarsal. सॉरी, ये ना यहाँ पे आना चाहिए था. जैसे अगर ये मेटाटार्सल है, देखो, if this is metatarsal, so this, ठीक है, this one, ये हो जाएगा. This one will be the long and this one will be the short plantar ligament. This one will be the short plantar ligament which is the calcaneocuboid ligament. Fine. Then the sling support. ठीक है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल का स्लिंग सपोर्ट होएगा. कौन होएगा? जो लेटरली प्रेजेंट है, पेरोनियस ब्रेविस एंड द पेरोनियस लॉन्गस. ठीक है, सो स्लिंग सपोर्ट लेटरली होएगा पेरोनियस ब्रेविस एंड द पेरोनियस लॉन्गस. ठीक है, और इनका एक्शन क्या होता है? इनका एक्शन आर इवर्जन. ठीक है, एक्शन इज इवर्जन. ऑलराइट. Then the sole of the foot. The sole of the foot, the muscles are arranged into the 4 layers. In the first layer, there are only and only abductor muscles. ठीक है, there are abductor muscles. So, abductor hallucis, and its nerve supply is the medial plantar nerve. ठीक है, nerve supply is the medial plantar nerve. Then abductor digiti minimi, nerve supply is lateral plantar nerve. Nerve supply is lateral plantar nerve. Then flexor digiti brevis. ठीक है, flexor digiti brevis, nerve supply is again medial plantar nerve. Fine. Then we will talk about the second layer. Fine. Next we will talk about the second layer. So second layer has two tendons and the 2 muscles. ठीक है, 2 tendons कौन कौन से होंगे second layer में, which is the flexor digitorum longus and the flexor hallucis longus. ठीक है, और 2 मसल्स कौन सी होंगी? एक तो होगी लंबराइकल्स. ठीक है, लंबराइकल्स, इसमें भी जो फर्स्ट एम्पियन होगी मीडियल प्लांटर नर्व. ठीक है, इसको मीडियल प्लांटर नर्व करेगी. यूनिपिनेट होती है, फर्स्ट वाले को मीडियल प्लांटर नर्व करेगी एंड द फर्स्ट वाली इज यूनिपिनेट फर्स्ट लंबराइकल एंड द सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ लंबराइकल विल बी बाइपिनेट.
ठीक है, बाइपिनेट, राइट. देन द सेकेंड मसल इज, पहले तो लंब्राइकल होगी, सेकेंड विल बी क्वाड्रेटस प्लांटी. ठीक है, इट विल बी द क्वाड्रेटस प्लांटी. फाइन. देन द थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर हो गया. देन थर्ड लेयर में दो फ्लेक्सर मसल्स आएंगी. ठीक है, दो फ्लेक्सर मसल्स आएंगी. कौन कौन सी? वन इज द फ्लेक्सर digiti minimi supplied by the common peroneal nerve. Then the flexor hallucis brevis supplied by the medial peroneal nerve. And the third one is adductor hallucis supplied by the lateral peroneal nerve, right. Then the fourth layer में आएंगी. One is the dorsal interossei, which is actually bipinnate, dorsal interossei, and these are 4 in number. ठीक है, dorsal interossei, these are 4 in number. ठीक है, then palmar interossei, dorsal interossei are like this. 2, 3, 4 and 5. ठीक है, so dorsal interossei will be bipinnate. Wait, these will be the bipinnate. ऐसे bipinnate ऐसे लगेंगी एक. ठीक है, then 2. ठीक है, then 3, then 4. ऐसी होगी डोर्सल इंटरोशे. देन पामर इंटरोशे. ठीक है, देन पामर इंटरोशे are 3 in number. And these are unipinnate. ठीक है, पामर इंटरोशे are unipinnate. ठीक है, 2, 3, 4, 5. So palmar interossei are like this. 1, 2, 3. 3 number in the unipinnate. Fine. So this was the fourth layer, and the muscle supplied by the medial plantar nerve. ठीक है, so there is a mnemonic because it is difficult to study it like this. So muscle supplied by the medial plantar nerve of in the foot. The mnemonic is laugh. ठीक है, there first lumbrical, then abductor hallucis, then flexor hallucis brevis, and the flexor digitorum brevis, right. Then the muscle supplied by the ऐसे मिडिल प्लांटर नर्व. ठीक है, और हम पाम में जो हमने देखा था मीडियन नर्व पाम में, उसका भी ऐसा सही था, लो ऑफ था उसका. ठीक है, लंब्राइकल ओपोनेंस पॉलिसिस, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, है ना. ठीक है, देन अप्लाइड देखते हैं. फाइन, लास्ट टॉपिक है, दैट इज अप्लाइड एनाटमी सोल की. सो अप्लाइड एनाटमी में मोर्टन्स न्यूरोमा. ठीक है, मोर्टन्स न्यूरोमा क्या होती है? दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द nerve entrapment in the foot. So there is the entrapment of the third common digital nerve.
fine, which is actually a branch of medial plantar nerve. ठीक है, third common digital nerve. So there will be the pain in third web space. ठीक है, this is called as Morton's neuroma. There will be pain in third web space, Morton's neuroma. Then one more applied is Baxter's neuropathy. Baxter's neuropathy. So there will be entrapment of the Baxter's nerve, which is the first branch of lateral plantar nerve. ठीक है, lateral plantar nerve. So if there will be entrapment of the first branch, which is the Baxter's nerve, then there will be Baxter's neuropathy. Fine.